Hello students. So today we are going to study the fourth part of chapter 2 Earth, longitudes and latitude, and the part which we are going to study, that is very interesting, longitudes and time. Now we have already known, children, that how latitudes are helpful for finding the different heat zone of Earth. Yes, in the same manner, longitudes are related or they are helpful for finding the time. How? That we are going to study in this part. Let's begin the part. So, before the invention of a clock, how human beings measure time? So, answer is we can measure the time by the movement of a sun. Let's understand with the help of this globe. Suppose I am the sun and this is your earth. Okay? So, I am facing this part. Sun is facing this part. So, this part receives sunlight. Yes? So, this part of the earth which receives the sunlight, it has daytime children. And the part that is back of this part, that has night children. Understood? And as you know, our earth rotates from west to east, so it keeps on rotating. So the part which get the sun rays here, the opposite part of that will have night. It keeps on moving, so again this day will become noon, and here in the evening, then here night came, and that part it has sun. So like this, the movement causes the change of day from daytime to night time, and from that movement of the earth, people came to know that it is the morning, it is noon, and it is evening, and it is night children. So now we will understand it more in detail. The sun rises and sets regularly and naturally children. Yes, you know the sun rises and sets regularly. So local time can be recognized by the shadow cast by the sun. We know every object has cast its shadow. So by the study of a shadow, people came to know it is morning, or it is evening, or it is noon, or it is night. In night, no shadows formed. Can you tell me why? Why at night no shadows people are able to see outside? Because we don't have sun at that time. But now, if you have bulb in the night time, and you will see the shadow of yours at night also. But outside, shadow is invisible. So, the shadow of the sun is shortest at noon. Yes, noon time means 12 p.m. exactly at noon time. 12, it is shortest. Okay, and it is longest is the sunrise and sunset. This activity you will also do, children. Now, see here. It is a stick which is kept in the ground. Take any
देख कर स्टडी कर पाते थे टाइम। ओके, एंड इट इज अ पिक्चर, यू विल सी इट इज एग्जैक्टली at 12 p.m. picture because the tree casts shortest shadow. Understood? And here also clock. If you go to Jantar Mantar in Delhi, you will find such type of clock which is used by the ancient people for detecting different type of arithmetical calculation, and also it detects the time. It is exactly 12 p.m. Okay, and it is the shadow of evening time and morning time, you can say, because the shadow is longer. Understood? So by the means of shadow, with the help of it, people are able to find the time when there was no clock, when there was no mobile, because nowadays people also don't need clock. They will see the mobile and find the time. Okay, now finding times. Now longitudes and time are related to each other. We have studies about longitude, that longitudes are the imaginary lines which run from North Pole to the South Pole, and they are the semicircles which we have already discussed about the longitudes and its characteristics, children. Okay, so longitudes help us to find out the time of a particular place. Particular place का time जानने के लिए we have to know the longitude of that place. Since the earth rotates from west to east, मैंने बताया आपको अर्थ हमारी कैसे रोटेट होती है, it rotates from west to east, so the places on the east will have sunrise. Obviously the places which falls on the east side of the globe, they have sunrise before that. It will move like this. So यहाँ जो sunrise east में हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ शाम होगी और फिर यहाँ रात हो जाएगी, और जो वेस्ट वाला पार्ट है धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, डे होगा. Let's understand with the help of globe. Suppose this, it is a west side, children, and that is a east side. Okay, and this is the picture of a sun. Exactly I keep our globe like this, and this is sun. So sun rays fall over here. It is east. So यहाँ पर east में if it is 5 o'clock, understood, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी अभी. So ये 5 मॉर्निंग है ईस्ट साइड में. जैसे ही अर्थ हमारी ग्लोब यहाँ पर अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, सो ये 5 से अब 6 हुआ, 6 से 7 8 9 10 11 12. एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या हो गया, मूव. अंडरस्टूड? देन यहाँ फिर ऐसे ये मूव कर रही है, सो टाइम चेंजेस अकॉर्डिंगली. सो जो ईस्ट साइड के जो कंट्री है, स्टेट्स है, जो भी आप कंट्रीज है, वहाँ पर सनराइज पहले होगा कंपेयर टू द वेस्ट साइड. अंडरस्टूड? सो the places on the east will get sunrise earlier as compared to the west side, children. तो क्या होगा यहाँ पर, it creates problem, क्योंकि यहाँ पर suppose if it is 5 o'clock, so यहाँ तो अभी टाइम कम है, यहाँ तो अभी रात है, यहाँ और यहाँ mid between here it may be यहाँ 5 o'clock है, तो यहाँ पर अभी 4 o'clock हुआ होगा. So the time which particular longitude shows, जो टाइम जो है particular longitude बताता है, that is a local time of that particular area. So वो टाइम जो है वो local time कहलाता है, children. Now we will study more in detail the local time. What is the meaning of local time? So meaning of a local time. Local time is the real time of a place according to its corresponding latitude. Local time क्या होगा? It is a real time. Actually, local time is the real time which is according to its corresponding latitude. जो latitudes में वो एरिया फॉल हो रहा है, उस एरिया में जो आ रहा है, उस एरिया में वो करेक्ट टाइम बताता है, लोकल टाइम बताता है वो latitudes. All the places falling under the particular meridian known to have one time. उस particular latitude में पड़ने वाले जितने भी places हैं,
whatever time, suppose I am a sun, so here 12 o'clock, फिर यहाँ it is 11 o'clock, उसके पीछे it is 10 o'clock, so टाइम चेंजेस होगा और ये ईस्ट साइड है तो ईस्ट साइड में टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे 12 o'clock है, उधर 1 o'clock हो चुका होगा, उधर 2 o'clock हो चुका होगा। सो ये टाइम चेंजेस के वेरिएशन के कारण ही क्या किया गया 1884 में, जो 1884 में डिफरेंट टाइम जोन को कॉन्सेप्ट आया। अभी क्या है टाइम जोन को कॉन्सेप्ट, वी विल सी। बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन बैंड। सो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारी कंट्री ने मिलकर एक साथ एक एग्रीमेंट बनाया एंड दे डिसाइडेड 24 डिफरेंट टाइम जोन। ओके, उन्होंने पूरी अर्थ को कितने जोन्स में बांटा है, दे डिवाइडेड होल अर्थ इनटू 24 डिफरेंट टाइम जोन्स एंड ईच जोन कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। चिल्ड्रन, हर एक जोन का 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है एंड द प्राइम मेरिडियन passes through the Greenwich Observatory near London is used as the starting point or a line of a reference। और एक कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है, जैसे आपकी रेस भी होती है, when you are starting your race you should have one starting point और एक finish point, तभी आप पता कर पाओगे कि कौन फर्स्ट आया, कितने मिनट में कितना दौड़ा। Similarly, for making the time zone 24 time zone in our earth, we have to take one reference point, एक starting point हमें लेना था। So that starting point is taken by different country and that is a prime meridian or 0 degree longitude which passes from Greenwich Observatory at London। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी Greenwich है, it is your Greenwich and it is 0 degree, understood। so 0 degree जो है वहां पर मेरिडियन को ही क्या माना गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना गया। और यहाँ का लोकल टाइम जो ग्रीनविच का लोकल टाइम है, इट इज आल्सो नोन एज GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ओके, उसको हम GMT भी कहते हैं। सो उसको रेफरेंस पॉइंट माना गया और उसके जस्ट अपोजिट, बिकॉज वी नो आवर अर्थ लॉन्गिट्यूड्स 180, अंडरस्टूड, हियर एंड ईस्टवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स, तो उस तरफ जो है 0 डिग्री के उस तरफ जो है अपोजिट साइड वी हैव इंटरनेशनल डेटलाइन दैट वी विल स्टडी इन अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। सी, सो कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम जोन, जैसे आप यू आर एबल टू सी हियर इट इज 3-5, हियर इट इज 4-5, हियर इट इज 10-5, हियर इट इज 8-5। सो ऐसे ही पूरी कंट्रीज में अलग अलग डिफरेंट लोकल टाइम जोन्स में बांटा गया है। नाउ एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places which are east of Greenwich, suppose this is the line of reference 0 degree and it is east side, children। so the places which is those places which ahead, माने ग्रीनविच से आगे, ये ग्रीनविच है, so ग्रीनविच से आगे जो होगा वो हर टाइम 1-1 घंटे का ज्यादा होगा, और ग्रीनविच के पीछे माने वेस्ट साइड, ये ग्रीनविच है, इट इज ईस्ट साइड, सो द वेस्ट साइड होगा, तो वहां पर क्या होता जाएगा, 1-1 घंटे कम होता जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ इट इज द कैलकुलेशन। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री in 24 hours। अर्थ रोटेट्स in 360 डिग्री because अर्थ is a sphere, children, and it has 360 degree 90 90 90 90, so 360 degree it moves, so 360 in 24 hours, so when we will divide 360 into 24 you will get 15 degree in 1 hour, understood। so 15 degree equals to 1 hour means
when we are moving to the west, so 1 घंटे वो पीछे होगा. Understood? So 15 degree के variation पे we have divided. I hope this concept is understood to all. Now it is a picture of prime meridian, children. It more clear your concept. Prime meridian 0 degree. So this is the west part and this is the east part, and you can able to see this also. It is prime meridian which passes from here. You can see from your globe, and just opposite of that it is international date line, children. And prime meridian, it is a reference point. Understood? Here different time zones we have divided our earth. यहाँ पर it is noon, it is 0 degree, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 means 12 west side and 12 east side. It means we have all together 24 time zone, and this is 0 degree which is taken as a reference point, and it time shows, the time shows by prime meridian is also known as GMT time या Greenwich time. Let's clear. It is more clear from where to where the 0 degree of prime meridian passes. Here it is a Greenwich observatory. It is located in London. ये Greenwich observatory है. Observatory यानी जहाँ ये सारी चीजों की स्टडी करी जाती है. It is located here. So ये point of reference यहाँ से लिया गया है. जो लाइन आपकी पास हुई है ये अफ्रीका से होते हुए ये 0 डिग्री. Understood? So जो भी places ईस्ट होंगे, इस ग्रीनविच के ईस्ट साइड होंगे, वो हर एक लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री अहेड, माने यहाँ पर अभी ये 1 घंटे आगे है, फिर यहाँ ये 2 घंटे आगे हो जाएगी, यहाँ 3 घंटे आगे हो जाएगी. लाइक दैट इट अहेड फ्रॉम ग्रीनविच टाइम. और यहाँ पर इट माइनस. अंडरस्टूड? यहाँ पर सपोज इट इज 12, then here 11, then here 10, 9 like this. Understood? Now let's understand with one example. Suppose it is a prime meridian which is located at London. Here the time is 1 PM. यहाँ पर टाइम कितना है आपका? 1 PM है. 1 PM बजे and its west side is न्यूयॉर्क. यहाँ पर न्यूयॉर्क है. न्यूयॉर्क का टाइम अभी क्या हुआ है यहाँ पर? 8 AM. अच्छे से देखिए, जब यहाँ 1 PM है, so न्यूयॉर्क का टाइम 8 AM बता रहा है. And when we are talking about India, क्योंकि इंडिया प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड है, so इंडिया में कितना बजा है? 6:30. So लंदन से इंडिया का टाइम डिफरेंस कितना हुआ चलिए? 5 hours 30 minutes. Understood? So जब यहाँ पर when it is a time 1 PM, here it is 6:30 PM. So time का गैप कितना हो गया? It is a gap of 5:30 minutes. 5 hours 30 minutes. And when we are moving to the west, न्यूयॉर्क जो है प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड है, सो यहाँ पर टाइम कम होगा. सो अभी यहाँ 1 बजे है, लेकिन न्यूयॉर्क में अभी कितना टाइम हुआ है? 8 बजे की सुबह के. सो यहाँ टाइम आवर का डिफरेंस कितना है? -5. सो यही मैं आपको समझाई हूँ. दिस ओनली आई एक्सप्लेन कि व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द टाइम इंक्रीजेस. इट इंक्रीजेस एवरी 15 degree at 1 hour. Understood? So we have a time difference from GMT. GMT की टाइम से हमारी इंडिया का टाइम में कितना डिफरेंस है? 5 hours 30 minutes. It means कि जब अगर आप किसी अपना कोई आपका फ्रेंड है, अगर he is in London, so अगर आप उसको अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 PM पे आप उसको बोलोगे गुड इवनिंग फ्रेंड, तो उसके यहाँ क्या हुआ होगा? उसके यहाँ भी नून ही चल रहा है, because it is 1 PM. Understood? You are taking tea over here and he is having his lunch over there. So this is the time difference caused by the different longitude, and it is a local time of particular places. So I hope children this concept, because it is very important concept of how you calculate time with the help of longitude. You should understand all the calculation. This is very important concept.